Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Ashtottara Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai ISKCON Samsthapakacharya Savior of the whole world Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai Nithai Gaur Premanandi Hari Bol
both the classes. Initiation related also. Same flow. It's about 1 hour. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 19, Text number 16. Tena itham ahataha kshattaha tenetham ahata kshattar Bhagavan adi sukaraha Bhagavan adi sukaraha na akampata manak kvapi nakampata manak kvapi sraja hataha iva dvipaha sraja hata iva dvipaha tenetham ahata kshattar Bhagavan adi sukaraha nakampata manakvapi sraja hata iva dvipaha tenetham ahata kshattar Bhagavan adi sukaraha nakampata manakvapi sraja hata iva dvipaha tenetham ahata kshattar Bhagavan adi sukaraha nakampata manakvapi sraja hata iva dvipaha tena bahiranyaksha itham thus ahataha struck kshattaha O Vidura Bhagavan the Supreme Personality of Godhead Adisukaraha the first bore na akampata did not feel quaking manak even slightly kwa api anywhere sraja by a garland of flowers hataha struck iva as dvipaha an elephant. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Do you like to read in Hindi? Or it's okay? Translation: hit in this manner by the demon, O Vidura,
The Lord who had appeared as the first boar did not feel the least quaking in any part of his body, any more than an elephant would when struck with a wreath of flowers. Please repeat this translation after me. Hit in this manner by the demon, O Vidura, the Lord who had appeared as the first boar did not feel the least quaking in any part of his body, any more than an elephant would when struck with a wreath of flowers. Purport by Srila Prabhupada. As previously explained, the demon was originally a servitor of the Lord in Vaikuntha, but somehow or other he fell as a demon. His fight with the Supreme Lord was meant for his liberation. The Lord enjoyed the striking on his transcendental body, just like a fully grown-up father fighting with his child. Sometimes a father takes pleasure in having a mock fight with a small child, and similarly the Lord felt Hiranyaksha's striking on his body to be like flowers offered for worship. In other words, the Lord desired to fight in order to enjoy his transcendental bliss. Therefore, he enjoyed the attack. Thus ends the Bhaktivedanta purport. Om Ajnanatimmirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. This chapter is entitled The Killing of the Demon Hiranyaksha. इस अध्याय का शीर्षक है हिरण्यक्ष असुर का वध. Now, killing, if it happens by the Supreme Lord, then that killing is actually not real killing. It is actually liberation. यदि भगवान के हाथों से वध होता है तो वास्तव में वध नहीं है, वो मुक्ति है. This is because the Lord is absolute. There is no difference between his killing and his protection. क्योंकि भगवान परम है, सो उनके सुरक्षा में और उनके वध करने में कोई अंतर नहीं है. So it appears like the Lord protects the demigods and kills the demons, but actually the Lord is equal to both, so he delivers both of them, whether he protects the demigods or kills the demons. ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान देवताओं की सुरक्षा करते हैं और असुरों का वध करते हैं, किंतु वे दोनों के प्रति ही समान भाव रखते हैं, चाहे वो देवताओं की सुरक्षा करें या असुरों का वध करें. Now in the verse it is being explained that there was a fight between Hiranyaksha and the Supreme Lord. So इस श्लोक में अभी वर्णन है कि भगवान और हिरण्यक्ष के बीच में युद्ध हो रहा है. So this activity of fighting is also a pastime of the Supreme Lord. So ये लड़ने की जो क्रिया है ये भी भगवान की एक लीला है. Because the Lord takes pleasure in all his activities. क्योंकि भगवान अपने सभी कार्यों में आनंद लेते हैं.
Lord is described as Anandamayo Abhyasat. He is full of bliss. सो भगवान को आनंदमय अभ्यासात के रूप में वर्णित किया है, जिसका अर्थ है आनंद से परिपूर्ण. So all his activities are simply meant for giving pleasure to himself and his devotees. सो उनके सारे कार्य केवल उनके और उनके भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए किए जाते हैं. Even we try to enjoy by certain activities in this material world. सो इस भौतिक जगत में हम भी कुछ कार्य करके आनंद लेने की कोशिश करते हैं. But not always our activities giving us pleasure. बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारे कार्य हमको आनंद प्रदान करें. As Krishna explains in the Bhagavad-gita, Matra sparshastu kaunteya shitoshna sukha dukkhadaha. The contact of the senses that usually happens when you do any activity with the sense objects, that results in sometimes sukha, sometimes dukkha. सो भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि मात्रा स्पर्शस्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा. जब कभी कभी हमारी इंद्रियां जब इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती है तो कभी उनसे आनंद मिलता है, कभी दुख मिलता है. But actually, even though it is said sukha and dukkha, both are actually illusory. सो ये जो सुख और दुख है ये दोनों ही भ्रमित करने वाले हैं. There is no real sukh or real happiness in this material world. इस भौतिक जगत में कोई वास्तविक सुख नहीं है. So real happiness is actually in relationship or in contact with the Supreme Lord. वास्तविक आनंद जो है वो भगवान के संपर्क में या संबंध में प्राप्त होता है. So here it is said that when the Lord had appeared as the Adisukara, the first boar, now this appearance of the Lord in this form is also bewildering for the materialists and the demons. सो यहाँ बताया गया है कि भगवान जो है आदि सूकर के रूप में अवतरित हुए और उनका जो अवतरण है ये जो असुरी लोग हैं या भौतिकवादी लोग हैं उनके लिए उनको मोहित करने वाला है. So how can God, who is the Supreme Personality, appear in this horrible form? सो कैसे भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है वो इस प्रकार के स्वरूप में आ सकते हैं, भयानक स्वरूप में आ सकते हैं. So again, this is also part of the pastime of the Lord. सो ये भी भगवान की लीलाओं का ही एक अंग है. He can appear in any form, but all those forms are completely transcendental. सो वे किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं और उनके सारे जो अवतार हैं रूप में वो सब दिव्य हैं. So this form is not a material form. That is the first lesson in spiritual life. सो आध्यात्मिक जीवन का पहला सबक ये है कि ये जो भगवान का रूप है ये भौतिक रूप नहीं है. We have a material form. Demons have material form. Demigods have material form. But the Lord always is transcendentally situated. He always appears in a spiritual form. हमारा भौतिक रूप होता है, असुरों का देवताओं का भौतिक रूप होता है, किंतु भगवान जो है वो सदैव दिव्य स्तर पर स्थित होते हैं. सो उनका स्वरूप हमेशा दिव्य होता है. So what is a transcendental boar looking like? It was very, very, very beautiful to look at. सो ये जो दिव्य शुक्र रूप में भगवान है कैसे दिख रहे थे, ये बहुत बहुत सुंदर थे दिखने में. Because he is full of beauty. Even his appearance in the form of a boar is very, very beautiful. क्योंकि वे सुंदरता से परिपूर्ण हैं इसलिए वे शुक्र रूप में आते हैं तब भी वे अत्यंत सुंदर दिखते हैं. That is not possible in the material world. You see a boar is so dirty, so ugly.
So this difference always exists between the Supreme Lord and the living entity. सो ये भौतिक जगत में संभव नहीं है। यदि हम भौतिक जगत में कोई शुक्र देखेंगे तो बहुत ही घिनौना, बहुत ही गंदा होता है। सो ये है अंतर भगवान में और एक जीव में। Even if the most beautiful form of any human being or even a devata, but that form is subject to disease, old age and death. So what kind of a beauty is that? यदि किसी देवता या मनुष्य इनका सुंदर रूप हो तो भी वो कहते हैं क्रमशः वो नष्ट होता है। तो ये किस प्रकार का सौंदर्य है फिर? So real beauty is eternal beauty, not temporary beauty. सो वास्तविक सौंदर्य जो है वो शाश्वत सौंदर्य है, इस तरह का क्षणभंगुर सौंदर्य नहीं। So that is possible only for a spiritual form, eternal beauty. सो वो शाश्वत सौंदर्य केवल एक आध्यात्मिक रूप के लिए ही संभव है। So here Srila Prabhupada explains that this demon, Hiranyaksha, was originally a servant of the Supreme Lord in the Vaikuntha planet. श्रील प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं कि ये जो असुर हिरण्याक्ष है वो वैकुंठ में भगवान का सेवक था। Some or other he fell down as a demon. So किसी कारणवश उसका एक असुर के रूप में पतन हुआ। So this fall down also can happen in two different situations. So ये पतन जो है दो अलग अलग परिस्थितियों में हो सकता है। One is when a devotee in the spiritual world has to participate in the Lord's Leela in the material world, and such participation, if it requires that there has to be a fight between the Lord and his devotee, then the devotee may appear as a demon, but actually he is appearing for the sake of participating in the Lord's Leela. So प्रथम है कि जब भक्त को यहाँ भौतिक जगत में भगवान की लीला में सहभागी बनना है, और जब भगवान को इस तरह लड़ने या युद्ध की लीला करनी है, तो ये संभव है कि वो भक्त यहाँ पर इस तरह भौतिक जगत में अवतार ले भगवान की लीला में भागीदार होने के लिए। Because the Lord doesn't have to fight with any materialist or any envious person or any conditioned soul. भगवान को किसी भौतिकवादी, ईर्ष्यालु या बद्ध जीव से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। He is completely competent to maintain, to kill, to destroy by his energies or by his agents. तो भगवान पूर्ण रूप से सक्षम है सभी का पालन पोषण, उनका संहार करने के लिए अपने एजेंट्स द्वारा, अपनी शक्तियों द्वारा। But when the Lord wants to engage in mock fighting, then his devotee comes down to fight against the Lord for the pleasure of the Lord. He may even appear as a demon. So जब भगवान इस तरह से खेल खेल के युद्ध में भाग लेना चाहते हैं, तो फिर उनके जो भक्त हैं वो यहाँ डीमन है, असुर के रूप में अवतार लेते हैं। So it is said here, the Lord enjoyed the striking on his transcendental body. So यहाँ वर्णित है कि भगवान को आनंद मिला जब उनके दिव्य शरीर पर प्रहार हुआ। Now transcendental body, there is no question of pain. So जो दिव्य शरीर है उसमें दर्द का प्रश्न ही नहीं उठता है। So therefore it is simply meant for the pleasure of the Lord. So इसका अर्थ है कि ये केवल भगवान के आनंद के लिए ही है। And Srila Prabhupada gives an example here, just like a fully grown up father when he is fighting with his child. श्रील प्रभुपाद यहाँ उदाहरण देते हैं कि एक पिता है वो अपने बालक के साथ लड़ रहे हैं। So that is just a mock fight, it is not a real fight. So ये से खेल खेल की लड़ाई है, ये वास्तविक लड़ाई नहीं है। Similarly, Prabhupada says
There's a mock fight between the Lord and the demon who is actually his own devotee. So इसी तरह से श्री प्रभुपाद बताते हैं कि ये खेल खेल का युद्ध है जो भगवान और उनके भक्त के बीच में चल रहा है. So even when Hiranyaksha is striking the body of the Lord, it is like flowers offered for worship. So जब हिरण्याक्ष भगवान के शरीर पर प्रहार कर रहा है तो वो भी पूजा में अर्पण के फूलों के समान लग रहे हैं. That's why the comparison in the verse itself is, the Lord did not feel any pain, just as an elephant will never feel pain when you throw a garland of flowers on its body. So इसकी उपमा इस प्रकार दी गई है कि एक हाथी है, अगर हम उसके ऊपर फूलों का हार फेंक कर मारे तो उसको कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा. So the conclusion is, the Lord desired to fight in order to enjoy his transcendental bliss. So निष्कर्ष ये है कि भगवान अपने दिव्य आनंद के लिए उन्होंने इस युद्ध की इच्छा की. Now the Lord wants all of us to participate in his transcendental bliss. So भगवान हम सबसे चाहते हैं कि हम उनके इस दिव्य आनंद में भाग लें. So in the Bhagavad-gita he describes this. First of all, he describes my devotees. They are under the shelter of my spiritual energy. They are not under this material energy. So भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि मेरे भक्त जो हैं वो मेरे आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत हैं, मेरी भौतिक शक्ति के अंतर्गत नहीं है. महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः. That means those who are Mahatmas here refers to devotees. So devotees are always under the protection of the internal potency of Krishna, the spiritual potency. So महात्मा मतलब जो भक्त होते हैं वो भगवान के अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में रहते हैं. So even when they come to this material world, they are not under the material energy. They are always under the spiritual energy, even in the material world. So जब वे भौतिक जगत में भी आते हैं तो वे भौतिक शक्ति के अधीन नहीं होते हैं, वे आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत ही होते हैं. So this is the difference between Arjuna and Duryodhana. So ये Arjuna, okay. So ये है अंतर अर्जुन और दुर्योधन के बीच. Arjuna appears to be like a Kshatriya fighting on one side in the battlefield of Kurukshetra, and Duryodhana appears to be another Kshatriya fighting on the opposite side. So अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक पक्ष में युद्ध करते हुए क्षत्रिय प्रतीत होते हैं और दुर्योधन दूसरे पक्ष में युद्ध करते हुए क्षत्रिय प्रतीत होते हैं. But actually Arjuna's position is completely different. He is fully protected by Krishna's spiritual energy. किंतु अर्जुन की परिस्थिति पूर्ण रूप से भिन्न है, वे पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में है. And Duryodhana is completely under the material energy which is completely bewildering him. और दुर्योधन पूर्ण रूप से भौतिक शक्ति के अंतर्गत है जो उसको पूर्ण रूप से मोहित कर रही है. And you can read the Bhagavad-gita, study the Bhagavad-gita and understand, even when Duryodhana was having much more powerful army on his side, still when he saw the Pandavas, he began to feel fear in his heart. Just by seeing the Pandavas standing to fight, Duryodhana began to feel fear in his heart. So हम भगवद गीता के अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि जब दुर्योधन के पास पांडवों से भी बहुत विशाल सेना थी, किंतु जब उसने विपक्ष में पांडवों को खड़ा देखा तो उसको अपने हृदय में भय का अनुभव हुआ. And when the Pandavas were blowing their conch shells, again it struck terror in the hearts of all the sons of Dhritarashtra, all the Kauravas. और जब पांडवों ने अपने शंख बजाए तो फिर धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के हृदय में आतंक छा गया. So this is explained in the Bhagavatam. Bhayam dvitiyabhiniveshatah syat ishadapetasya viparyayo smritihi. One actually experiences fear in this material world only when one is under the material energy.
सो भागवतम में समझाया गया है कि जब इस संसार में कोई भय से तब ग्रस्त होता है जब वो भौतिक शक्ति के अंतर्गत होता है. One who takes shelter of Krishna's spiritual energy, that is a devotee, is never going to experience any fear in this material world. किंतु जो भगवान की अंतरंग शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति के अधीन होता है, अर्थात भक्त, उसे कभी भी किसी प्रकार के भय का अनुभव नहीं होता. So Arjuna, even though he displayed some symptoms as if he was affected by seeing the army of the Kauravas, but actually he was feeling compassion for the Kauravas, not that he was afraid of fighting the Kauravas. सो अर्जुन ने जब कौरव सेना को देखी तो उनके हृदय में उनके प्रति करुणा आई, लेकिन वो भय नहीं था, वो उनके प्रति करुणा थी. So that's a difference, you see. Arjuna, he's not afraid of fighting the Kauravas, but he feels compassion because he's a pure devotee of Krishna. सो अर्जुन कौरवों से युद्ध करने के लिए भयभीत नहीं है, किंतु कृष्ण, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त होने के कारण उनके हृदय में करुणा भाव था उनके लिए. So today is Gita Jayanti. So on the occasion of Gita Jayanti, we should remind ourselves that this understanding of the Bhagavad-gita is only possible if we read, study or hear the translation and the explanation given by pure devotee Prabhupada. सो आज गीता जयंती है और गीता जयंती पर हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि इस प्रकार की भगवद गीता की समझ तभी संभव है जब हम श्रील प्रभुपाद जैसे एक शुद्ध प्रामाणिक भक्त से इसका अनुवाद और तात्पर्य समझें. Who can explain why Arjuna was appearing to be completely heartbroken when he saw the Kaurava army? Who can explain this? सो ये कौन समझा सकता है कि अर्जुन कौरव पक्ष को देखकर इस तरह से हृदय विदीर्ण हुए, ऐसा कौन समझा सकता है? Only Prabhupada, the pure devotee, can explain this. Nobody else can explain. केवल प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त ये समझा सकते हैं, अन्य कोई ये समझा नहीं सकता. So therefore, on this day, our request is, if somebody is really reading or studying Bhagavad Gita, please do not touch any other Gita if you want to understand properly the Bhagavad Gita. सो आज के इस दिन पर हमारा निवेदन है कि यदि आप सही तरीके से भगवद गीता समझना चाहते हैं तो फिर अन्य किसी भगवद गीता को मत हाथ लगाइए, केवल इसी को पढ़िए. Only Prabhupada's Gita can explain to you, can help you understand the real meaning of the Bhagavad Gita. केवल प्रभुपाद की भगवद गीता ही हमें भगवद गीता का वास्तविक अर्थ समझा सकती है. And today, after so many years, Prabhupada translated sometime in 1971. So it's like 29 plus 22. Say 51 years. 51 years later, this is the largest selling Gita in the entire world. And this Gita has been translated into more than 50 languages. And this Gita has made, most importantly, millions of devotees of Krishna all over the world. सो 1971 जब प्रभुपाद ने इसका अनुवाद किया था, तब से 51 साल के बाद भी आज ये विश्व में सबसे ज़्यादा वितरित होने वाली भगवद गीता है और इससे लाखों लाखों लोग इसको पढ़कर भक्त बने हैं. So, because it has got the correct explanation, it's got the potency, therefore it is transforming hearts. Other Bhagavad Gitas cannot change anybody's heart. क्योंकि इसमें सही व्याख्या की गई है, इसलिए इसमें वो शक्ति है जिससे हृदय परिवर्तन हो सके. अन्य गीतों में शक्ति नहीं है. Now today some devotees are going to take Diksha, initiation. So let's try to understand what is the meaning of this initiation. सो आज कुछ भक्त दीक्षा लेने वाले हैं, सो अभी हम समझने का प्रयास करेंगे कि दीक्षा क्या होती है. In spiritual life, if at all somebody is serious about spiritual life, then the Bhagavad Gita, it is
advised or instructed by Krishna, tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya. One has to approach a bona fide spiritual master, surrender to such a spiritual master, inquire from him, and actually serve him. Only then such a spiritual master will actually properly impart and enlighten a prospective disciple. तो यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में गंभीर है तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि हमें एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना है, उनकी शरण ग्रहण करनी है, उनसे जिज्ञासा करनी है और उनकी सेवा करनी है। तभी प्रामाणिक गुरु सही प्रकार से अपने शिष्य को इस दिव्य ज्ञान से प्रकाशित कर सकते हैं। So if you really want transcendental knowledge, the 4th chapter Bhagavad Gita clearly Krishna says that evam parampara praptam. This knowledge is received in parampara system. You cannot just read some book or hear some any person simply and understand, or by your own self analysis you cannot understand this knowledge. So यदि हम आध्यात्मिक ज्ञान दिव्य ज्ञान पाने में गंभीर हैं तो चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, हमें ये ज्ञान परंपरा में लेना चाहिए। हम अपने प्रयास से या यूं ही किसी से जाकर इस ज्ञान को नहीं सीख सकते। So Prabhupada is Guru coming in parampara, beginning with Krishna. This parampara, this disciplic succession begins from Krishna. So he is coming in this parampara, beginning from Krishna. And that is what he has clearly written in the Bhagavad-gita. This Bhagavad-gita as it is received in this following disciplic succession, beginning from Krishna. So श्रील प्रभुपाद एक आचार्य हैं जो भगवान कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा में आते हैं, और ये श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता में बताया है कि ये भगवद गीता जो है इस परंपरा में आ रही है, इस परंपरा में दी गई है। So serious practitioners of spiritual life, they approach such a spiritual master like Prabhupada and accept what is called as initiation. Initiation means the beginning of proper practice of spiritual life under the guidance and instructions of the bona fide spiritual master. So जो आध्यात्मिक जीवन के गंभीर साधक हैं वो श्रील प्रभुपाद जैसे प्रामाणिक गुरु के शरण में जाते हैं और उनसे दीक्षा स्वीकार करते हैं। So दीक्षा का अर्थ है कि जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति, the practice under guidance and instructions of Prabhupada. So श्रील प्रभुपाद के निर्देश में और उनके मार्गदर्शन में इसका अभ्यास करना। Now even without taking initiation somebody may practice, but initiation involves taking vows that I will follow the instructions of Srila Prabhupada, especially chanting Hare Krishna 16 rounds every day and following the 4 regulative principles in order to make quick progress in spiritual life. So कोई बिना दीक्षा लिए भी इनका अभ्यास कर सकता है, किंतु दीक्षा लेने का मतलब है कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम कुछ नियमों का पालन करेंगे, जैसे 16 माला जप करना, 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करना, जिससे हम आध्यात्मिक जीवन में तीव्र उन्नति कर सकें। So if you want to make quick progress, how quickly? At the end of this life, you can go back to Godhead. So यदि हमें तीव्र उन्नति करनी है तो कितना तीव्र? इसका अर्थ है कि इस जीवन के अंत में हम भगवत धाम वापस जा सकें। Otherwise, there are so many practitioners who don't have shelter of a pure devotee like Prabhupada. They can practice, but they will be practicing for Shata Koti Vatsara, at least 100 crore years before they even begin to understand what is transcendence, what is spirituality. अन्यथा ऐसे बहुत से साधक हैं जिनमें प्रभुपाद का आश्रय नहीं है, सो वे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन कितने शतकोटि वत्सर मतलब 100 करोड़ सालों तक, तब जाकर वो इस प्रक्रिया को समझने के प्रारंभ करेंगे। Whereas for us who are taking shelter of Prabhupada, the pure devotee Acharya, the moment we come in contact with Prabhupada,
already our spiritual understanding has been awakened, has begun. Because the first lesson in spiritual life is what Prabhupada teaches right in the beginning. We are not this body, we are spirit soul. Who else can teach this? Nobody else can teach this. किंतु हम जो प्रभुपाद के संपर्क में आए हैं, प्रभुपाद के आश्रम में आए हैं, सो प्रभुपाद के संपर्क में आते ही हमारा आध्यात्मिक जीवन का पहला सबक जो है वो प्रारंभ हो जाता है, वो है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है. The other practitioners, they are trying to find out what is the spirit, and so many ways they are doing experiment. They are speculating, they are trying to do some severe austerities to get some mystic power, or they are doing some pious activities to promote themselves to better status of life, simply to understand I am not this body, I am spirit soul. They are taking millions and millions of years. सो जो अन्य साधक है वो इस आत्मा को समझने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करते हैं, वे कठिन तपस्याएं करते हैं सिद्धियों की प्राप्ति के लिए या फिर भौतिक लाभ के लिए अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें लाखों लाखों वर्ष लगेंगे ये समझने के लिए कि आत्मा क्या है. When Shukadeva Goswami actually came to that assembly where Parikshit was actually preparing for quitting his body, saintly persons and great sages, very, very powerful personalities, they all came to hear Shukadeva Goswami speak about Atma. सो जब परीक्षित महाराज अपने पारायण की तैयारी कर रहे थे और शुकदेव गोस्वामी उस सभा में उपस्थित हुए, तो वहाँ पर बहुत महान महात्मा लोग शुकदेव गोस्वामी से इस आत्मा ज्ञान को सुनने के लिए एकत्रित हुए. That's because Shukadeva Goswami is a pure devotee of Krishna. Only he can explain what is this Atma, what is spiritual life. क्योंकि शुकदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए केवल वही समझा सकते हैं कि आत्मा क्या है. Even those who are Saptarishis, they have got a special planet of their own. They are above all the other living beings, all the other jnanis, tapasvis, yogis. Even they do not know what is this Atma perfectly. यहाँ तक कि जो सप्तऋषि हैं उनका अपना विशिष्ट लोक होता है, वो सभी जीवों से, सभी अन्य लोगों से बहुत ही श्रेष्ठ हैं, उच्चतर हैं, किंतु वे भी नहीं समझ पाते हैं कि आत्मा क्या है. So they also have to come and sit and hear from a pure devotee acharya what is this Atma. Only then they can realize it. Otherwise they are not possible. सो उन्हें भी आकर एक प्रामाणिक गुरु शुद्ध भक्त से सुनना पड़ता है कि आत्मा क्या है, तभी उन्हें साक्षात्कार हो पाता है, अन्यथा संभव नहीं है. So for all of us it's a lesson that we should also approach a pure devotee acharya who is not easily found in this material world. सो हम सब के लिए भी एक सबक है कि हमें एक शुद्ध भक्त आचार्य के शरण में जाना चाहिए, जिन्हें प्राप्त करना इस संसार में सरल नहीं है. This is explained in the Bhagavatam. सो ये भागवतम में समझाया गया है. मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने. Even among crores of liberated souls, crores of perfected beings, you cannot find easily even one pure devotee of Narayana. सो ये भागवतम में समझाया गया है कि करोड़ों मुक्त जीवों में, करोड़ों सिद्ध जीवों में भी हम भगवान नारायण के शुद्ध भक्त को नहीं ढूंढ सकते. In our earth planet, even to find one liberated soul is so difficult. हमारे पृथ्वी लोक पर एक मुक्त जीव को ढूंढ पाना भी बहुत कठिन है. So even Bhagavat says, even if you were to find so many liberated souls, they all are in the upper planets, in Brahmaloka, in Siddhaloka, there are so many. But even among them, it is very rare to find a pure devotee like Prabhupada.
भागवतम में वर्णित है कि जो सिद्ध जीव हैं वो ब्रह्मलोक सिद्ध लोग यहाँ पर निवास करते हैं, यहाँ तक कि उनमें भी श्री प्रभुपाद जैसे एक शुद्ध भक्त को ढूंढ पाना अत्यंत विरले है, बहुत कठिन है। So, such a pure devotee, it's our good fortune that we have Prabhupada, who is the rarest of rare personalities even among all the liberated and perfected beings in all the upper planets. So, ये हमारा अत्यंत सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद हमें उनका आश्रय मिला जो सारे सिद्ध लोगों में भी बहुत विरले मिल पाते हैं। So don't go to anybody else, don't search for another pure devotee, you can't find. Simply take shelter of Prabhupada and take initiation from him, and under his guidance you yourself can experience how quickly you can make progress. So अन्य किसी और के पास मत जाइए और हम कहीं दूसरे शुद्ध भक्त प्राप्त ढूंढ भी नहीं सकते हैं, हमें केवल श्री प्रभुपाद की सेवा में लगना चाहिए। So now the question arises that Prabhupada is physically not there. How can we approach him? How can we take guidance from him? So अब प्रश्न उठता है कि श्री प्रभुपाद दैहिक रूप से उपस्थित नहीं हैं, तो हम कैसे उनके पास जा सकते हैं, कैसे उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं? So that Prabhupada himself has taught us how we take his association even when he is physically not available. So श्रील प्रभुपाद ने स्वयं सिखाया है कि जब वे दैहिक रूप से उपस्थित नहीं है तो हम कैसे उनका शरण ले सकते हैं। So even when he was physically present in this planet before 1977, before he passed away, even then devotees were taking initiation from him, not by physically approaching him or physically meeting him, but by the system he set up to take shelter and take initiation from him. श्रील प्रभुपाद जब इस लोक पर उपस्थित थे तब भी भक्तगण उनसे दीक्षा लेते थे, तो शारीरिक रूप से उनसे मुलाकात करके नहीं, किंतु जो व्यवस्था श्रील प्रभुपाद ने बनाई थी उसके अंतर्गत। So there are devotees even during Prabhupada's time who did not meet Prabhupada, but they followed the instructions of Prabhupada to actually begin chanting Hare Krishna, associating with devotees who are similarly chanting under Prabhupada's guidance, and then following all the principles. And in that way, Prabhupada actually accepts disciples through the system he has set up. तो श्रील प्रभुपाद की उपस्थिति के समय भी ऐसे भक्त थे जो श्रील प्रभुपाद से कभी नहीं मिले, किंतु वो प्रभुपाद के निर्देशों का पालन करने लगे, जैसे जप करना, भक्तों का संग करना और बाकी नियमों का पालन करना। So इस तरह से श्रील प्रभुपाद ने उनको स्वीकार किया। So if Prabhupada accepted disciples then, he has given us a directive in which he says he continues to accept disciples. Why? Because pure devotees like him are not available in this material world at all, actually. श्रील प्रभुपाद ने तब भी भक्तों को शिष्य रूप में स्वीकार किया और अभी भी प्रभुपाद भक्तों को शिष्य रूप में स्वीकार करना जारी रख रहे हैं, जिस प्रकार उन्होंने निर्देश दिया उसके अंतर्गत, क्योंकि अभी संसार में शुद्ध भक्त मिल पाना बहुत कठिन है। So because pure devotees are not available, we have to accept Prabhupada's shelter and initiation through the system he has given, and this is very confidential. क्योंकि अब शुद्ध भक्त विद्यमान नहीं है तो हमें श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार ये स्वीकार करना चाहिए और ये बहुत ही गुह्य है। So now we will have the can we have time for questions? Anybody has any questions can ask. यदि किन्हीं भक्तों को प्रश्न है तो पूछ सकते 10 हैं। minutes. Give him the mic.
Hare Krishna Maharaj. Maharaj, is the criteria for one to become an acharya and to give diksha, is it becoming a pure devotee? If so, many people say that is it that in ISKCON or Hare Krishna movement there is no pure devotee as yet? The spiritual master is certainly a pure devotee of Krishna, and he is authorized by the predecessor spiritual master. On his own initiative, he doesn't become a guru, even if he is a pure devotee. So both these conditions have to be met. That he is a pure devotee and he is authorized by his predecessor Acharya. So, Prabhupada is authorized by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, his guru, who is the Acharya in Parampara before him. But who has Prabhupada authorized to actually become the Acharya? When he himself is telling, he remains the Acharya. So he has not authorized anybody else to become the Acharya. It's not a question of whether somebody is a pure devotee or not a pure devotee. Before that, the authorization is important. Okay, so प्रश्न इस प्रकार था कि दीक्षा लेने के लिए शुद्ध भक्त की आवश्यकता है. सो कोई ये प्रश्न उठा सकता है कि क्या ISKCON संस्था में कोई भी शुद्ध भक्त नहीं है? सो महाराज श्री ने उत्तर दिया है इस प्रकार कि श्रील प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त हैं और उन्हें अपने पूर्ववर्ती आचार्य, अपने गुरु द्वारा ये आदेश प्राप्त है कि वो गुरु बने. सो गुरु बनने के लिए दोनों योग्यताएं अनिवार्य हैं, एक शुद्ध भक्त होना और अपने पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा ये आदेश प्राप्त होना. So Prabhupada never ordered anybody to be. हाँ, so श्रील प्रभुपाद ने स्वयं ये घोषित किया था कि वे स्वयं आचार्य रहेंगे और उन्होंने किसी और को अपना नेक्स्ट आचार्य बनने के लिए आदेश दिया. Maharaj, when we pitch on our Prabhupada's Bhagavad-gita, and when we pitch that everyone should read that, when people compare with whatever existing Bhagavad-gitas they have, and then they say that when you are pitching so much, you are not respecting the other authors and other Bhagavad-gitas which is written by some other people. So how to defeat this without making any offense? What do they mean by offering respect? Even if somebody is speaking wrongly, where is question of offering respect when wrong has to be pointed out as wrong? It's just like there are so many people in the market who are dealing in, let us say, counterfeit currency. So etiquette is you should be respectful to everybody. All those are doing business. But we have to point out, if we are doing business not with counterfeit currency but with the real currency, we have to point out that what is counterfeit currency. If somebody brings a counterfeit currency, will you accept it just because you have to be respectful or you have to be nice to everybody? You have to point out it is counterfeit currency and there's something called real currency. You should help the person understand if the person doesn't know. So we are merely pointing out something which is not correct because that will be only beneficial for the person who is misled. He doesn't know. That's how he is accepting something which is wrong. He doesn't know what is right. Because the very person who is writing books himself he is in ignorance. Blind leading the blind. If you tell a blind leader, if you have eyesight and you tell a blind leader you are blind, he may become angry. You are envious of me. You are envious of me. You think only you are right? There can't be anybody else right? Only you are having proper vision?
Nobody else has vision. So they may get angry, they may find fault with us, but when the fact has to be presented, it has to be presented as fact. प्रश्न इस प्रकार था कि जब हम प्रभुपाद के भगवद गीता का वितरण करते हैं तो लोग आते हैं जिनके पास दूसरी कोई भगवद गीता होती है या दूसरे किसी भगवद गीता का संदर्भ देते हैं, बोलते हैं कि आप अन्य भगवद गीताओं का आदर सम्मान क्यों नहीं करते। महाराज श्री ने इस प्रकार उत्तर दिया है कि सबसे पहले तो जो लोग भगवद गीता की गलत टिप्पणी कर रहे हैं या गलत व्याख्या कर रहे हैं वही उसका आदर नहीं कर रहे हैं, और जब हमें पता है कि वो गलत है, उदाहरण के रूप में जैसे हम बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ असली नोट भी होते हैं, मतलब करेंसी, और नकली नोट भी होते हैं। हमें एक व्यापारी का सम्मान करना चाहिए, किंतु जब वो नकली नोट बांट रहा है या नकली नोट में व्यवहार कर रहा है उससे सतर्क भी रहना चाहिए और सचेत भी होना चाहिए और सचेत करना भी चाहिए कि ये नकली नोट है। किसी से सिर्फ हम अच्छा स्नेह भाव रखने या अच्छा रिश्ता रखने के लिए उसके नकली चीज़ों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो भगवद गीता पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं वे खुद ही भगवद गीता का आदर नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार का कार्य करके। Any other question? Okay, we'll stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।